These are all 3D printed parts and मैंने सबके ऊपर इपॉक्सी भी लगा दी है। और जैसे कि आप देख सकते हो अंदर मैंने फाइबर ग्लास लगाया हुआ है टू मेक इट मोर हार्डर, क्योंकि यहाँ से फिर ये ब्रेक हो सकता था, इसलिए मैंने अंदर फाइबर ग्लास लगा दिया है। और इधर भी आई एम गोइंग टू वेट इट। सो द होल प्लेन वेट इज़ 35 gram, and now I'm going to paste it with the super glue or Fevikwik, and then I'm going to use some fiberglass with epoxy to make it more harder and sand it on the surface. Let me do it. So I have pasted it with the Fevikwik. It is not strong enough, that's why I have to use fiberglass or carbon fiber on the inside of the joints to make it more harder. So this part is not printed very well, so I'm going to fill it by carbon fiber on the top and sand it at the last. This, the tail part is now to be joined. The one part of the wing is now ready. Let me join the next left wing. So now almost the plane is now assembled. So मैं इसके अंदर ये मोटर यूज़ करूँगा और इसके साथ मैं 1500 mAh की 2 सेल लाइपो बैटरी ये यूज़ करूँगा। अभी मैं एक पार्ट और ऐड करना भूल गया था इसके अंदर, ये इसका जो कॉकपिट है 253 ग्राम्स। एंड मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी रख देता हूँ इसके ऊपर। मैंने इसके ऊपर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स फिट कर दिया है, मतलब फिट नहीं करा है, जस्ट रख दिया है वेट निकालने के लिए। तो ये पूरा 400 ग्राम का बन रहा है। अभी मैंने इसके अंदर ESC फिट नहीं करी है, ESC का वेट अलग से आएगा, तो अप्रॉक्स 450 ग्राम्स तक मेरा ये प्लेन बनेगा।